Good evening, and I welcome you, students. This is going to be a very, very interesting and amazing lecture and amazing session. We are going to begin another and important topic from the ninth class NCRT, Chapter 7, Diversity in Living Organisms. Diversity in living organism. What it means, student? We have already told you what is a living organism. Do you know what is a living organism? Yes, sir. What is that? We told you the difference between non-living and living. What is the difference? When I say living organism, what do you mean by living organism, student? Sir, they are living. That means they are capable of performing other activities, all the activities like respiration and all the other functional activities. We are in the living, we are living what we are doing. We are respiring, you are saying we are breathing, we are eating, we are excreting, we are reproducing, we are walking, we are talking, all these activities we are doing. Yes, sir. And in this, he says, he is talking of the living organisms. That means he is talking of what type of living organisms we can see in our earth. What do you see on the earth, student? What type of living organisms you are seeing on the earth? Plants and animals. You are saying you are aware of plants. You are aware of animals. There are, only plants and animal or something more than that, students? Something more than that, More than that. like other microorganisms. What I am trying to say, diversity, actually there are different, what we are saying, student, there are different forms of life on earth. Different forms of life. Probably if you observe, you cannot even observe all the forms of life. Very important. What I observe, I am observing the human beings. I am observing the animals. Which animals? Even I cannot observe all the animals which are there, the earth. Are you aware of all the animals? The answer is no. Are you aware of all the birds which are flying? No. Are you aware of all the aquatic life which is inside the sea or inside the water? No. So our eyes which we are using in order to observe, we can only observe limited number of the living organisms. There is so many forms of the living organisms, millions more. It is estimated that more than 10 million living organisms are existing on earth. Estimated, I am saying, nobody can count because we have not seen many forms. 10 million different type of species may be existing on planet Earth, and identified about 1.6 to 1.7 million. 1.6 to 1.7 million species man is aware of. So now the important point, student, for example, are all the forms of organisms, living organisms, same or they are different? I am saying different. How do we know? If I say that, we say that one side you are saying there are human beings. Even in our man, you see man and woman. And then, okay, if I say that I see a cow, student, I see a dog, student. What other forms you see? You have seen monkeys, student. You are aware of the fish, students. Certain things which we know. You are aware of the pigeons, students, so much well they are flying on your homes and all that. But we are trying to say that there is so much diverse organisms, and you have seen ants which are very small. Then you are talking, there are bacteria, student, and now you are talking of viruses. You are not able to see with the eyes viruses, but you are aware of the coronavirus and other type of viruses. Therefore, students, life occurs on earth in different forms, and the dimensions and the sizes of the organisms are also very, very different. For example, the bacteria could be only few
micrometer. The size could be, the sizes are very much different. Very, very small micrometer. If you see the blue whale students, what do you find? On the other hand, you have blue whale and redwood trees of California, approximately 30 meters, 30 meter size. So you have redwood trees. You see trees, plants, small plants, trees, maybe 100 meters. Now you see the sizes, range of sizes, and insects, and also the lifespan is different. Our lifespan may be average around 60, 70, then a dog may be around 12, 13, 14 years, and then there may be some insects like mosquitoes, they may die within few days. So the your pine trees are living for thousands of years. Lifetime. What is a lifetime, student? And if I say mosquitoes, they may live only for a few days. And man is living for how? 60 to supposing 70 or 80 years. So you can see there is a difference in the lifespan, and you see different type of colors. What the type of color you see on pigeons, on peacocks? See in the peacocks? Yes, sir. Beautiful feathers are coming on the peacocks. And man, you see fair complexion, black complexion, and all different colors. We also see birds. You see variety of colors in the bird, student. Amazing colors are there in the birds. And you see flowers. Probably there is no color which you can't get in flowers. Beautiful colors. Sometimes I see a flower at a different place and the color is so good and so different from every other color. So the life around us is full of variety. So there is a bewildering variety of light which has evolved on Earth over millions of years. What has happened? Earth. Till now, is there life exist on any other planet? No, We have sir. not been able to discover. We have not been, a man is trying hard but not able to find anything. You're saying Earth is the only presently planet where life exists, and the life around has evolved over millions of years. Evolution, very important point, student. The evolution process took place on Earth and millions of years, students. It is not one day job. It is not 1 year job. It is not 10 years job. I am saying 100 years, 1,000 years, 10,000 years, 20,000, then lakhs of years and millions of years evolution has taken place. We may also evolve from some form of the cells which we know. So this is very, very interesting that there is a bewildering variety around us which we see, and evolution has also taken place millions of years and will continue. You know, you have seen coronavirus undergoing mutations. Yes, sir. Now what is happening? One coronavirus came and they said how many mutations have already taken place? How many? They are saying 10, 20, 30, more than that, and it will Yes, sir. continue. So what is happening when the new offsprings are born, student? There are mutations, there are changes. The main purpose of this is evolution. Evolution means the new generation wants to survive, and there will be modifications, there will be errors in the productions, and new type of varieties are produced. And over the millions of years, all this process happened. The survival of the fittest. Fittest will survive, others may not survive with change in environment, with change in temperature, with change in conditions of on the earth. All these, the species also undergo evolutions. So now the question is, can we study all these living organisms? So can I study supposing 1.6 to 1.7 million species separately, student?
Is it No, sir. possible? It will be very difficult. First of all, how will I give the name of 1.6217 and finding out where they are at? Some places there is only ice, at some there is only water, and how can we reach all the places? Also, we don't know. Can we see all of them? No, with our eyes, nothing. So, what is important then? What we have to do, student? So we don't have that much time, neither it is meaningful to understand all these living organisms separately. So if I have to look one by one, it is not possible. So we have to look for similarities among the organisms. So what should we do? There are different and diverse forms of the organisms. So we must see there must be some similarities. There must be some similarity, student, in different forms among the organisms. So we look for similarities among organisms. We human beings have similarities. Man has similarities. You know what is the body skeleton, what is the body structure, what food you are eating. So we can see there are similarities, but we are different from the cows. We are different. Cow is different from the buffaloes, but where we are more closer, we may look more close to monkeys than to the cow. And we are living on the ground. Then in the water you see there are fish and other species. So we can try to look for similarities among the organisms, which will allow us to put into different classes and then study different classes or groups as a whole. So we should try to form different classes, different groups, and then it will be easier for us to study them. See, you have science section, you have art section, you have commerce section. We will try to make classes, different classes, and then teach them together. It's not possible that if there are 3,000 students, each student will be taught separately. That will possible? Answer is no. If I can't be with teach 3,000 students, how can I go and study each and every species, which is the number is in million? Therefore, it becomes important, student, that we need to classify them. And without that, it will not be possible to study them. But classification has to be done on the basis of certain characteristics, certain properties, which they have similar properties. The students who are taking physics, chemistry, and maths, they are similar in 11th. Students who are taking commerce, maths, and other social subjects, they are similar. Students who are taking physical education, they are similar. So we have to see what are the characteristics on the basis of which we will be able to classify them or form classes. So we need to decide which characteristic decide more fundamental differences among organisms. Characteristics are so many, but we have to see which are more important characteristics, which are the fundamental differences between among the organisms. So this will create main broad groups of organisms. Within these groups, smaller subgroups will be decided by less important characteristics. All we are saying, students, that the properties and characteristics which are fundamental, that should make one classification. And then the one which properties are less fundamental, they will form the subgroups. So we will form certain groups, then we will form certain subgroups. Therefore, this need was realized by the biologist. The scientist of the biology realized this, that the best thing would be to do classification. In chemistry also, what we have done, student, a periodic table has been provided. What was the purpose of periodic table? Classification of the elements. Those, if I study all elements, each element is forming large number of compounds. Supposing carbon form millions of compounds. So if I start studying each and every compound separately, my God, rather we have to put some groups.
so that we know what are the general characteristics, general properties. On the basis of electron configuration, we did that. Atomic number, we did that. You have seen the periodic table. Yes, sir. So here is also a need, student. We have to classify the organisms. Therefore, let us see how the biologist and the scientist did that job. Okay, very important. So the first question here is before us. First question, student. If I put first question number 1, what do you mean by diversity in living organisms? What do you understand by diversity by now, student? What answer you will give? So the varieties of living organisms. All right. Our planet is gifted with numerous living organisms which vary in size, shape, habitat, nutrition, reproduction, and lot more. So you have, as we said, 1.6 to 1.7 million species. And estimated, I'm saying 10 million, which we can't even find out. And they have different size, shape, habitat, nutrition, reproduction. You see the fish is living in water. If you bring the fish out of water, it survives. No, sir. And you have seen those species which are flying and living in the air. And then you have seen we are walking on the grounds, and plants and trees, are they able to walk? No, sir. So they are fixed and stationary. So physical features and their habitat, these animal kingdoms are classified into different order and class. Therefore, we have to, as we said, we have to form classes, just as we are forming classes in schools. So different classes will be there, different orders will be there. And what we talk of kingdom, animal, how many kingdoms are there which we can classify? And we, as we said, that certain characteristics will be used. Characteristics will be used, student. The properties of different species are different. So on that basis, we may try to put different classes of the organisms. So then it is very clear that it is not possible to study the species separately, hence classification is essential. Question number 2, students. These questions are very fundamental and important. Question number 2, I am putting, what is biodiversity, student? Biodiversity, you have heard, students, that there are certain rainforests. There are certain tropical areas on planet Earth where you say maximum number of plants and animals are available. And all the sum total plants and animals which are found in a particular area, that is what we mean by biodiversity. In every country or in every part of the world, you will see that there are different types of plants, animals, and species in a particular area. If in my country also, if you go to desert area, and if you go to where there are more plants, rivers, or there is more rainfall areas, there is where certain more temperature is there, you will see that there will be variation in the biodiversity. So what do you mean by biodiversity? The sum total of all plants and animals found in particular area. These living things also have a particular temperature, air pressure, moisture, water, soil, elements, water. All this is required for the growth of and existence of these. With a change in temperature, student, what will happen? If I go to Antarctic where there is only snow, how many species we can find there? But there are, you have seen what you see on the snows,
What type of animals you are finding on the snow? Have you, Yak and white bears. and what other forms are there? Penguin, where penguins are there? You have seen Antarctica region. some places. So they can survive there. That is a climate, that is a temperature, that is the habitat area in which they are living. So they evolved, students. There is an evolution which we saying at a particular place to live. Others don't survive, they will die. And that process, as we said, evolution, millions of years have taken place. So it is a measure of all variations found at the genetic, species and ecosystem level. It is mainly influenced by environmental, geographical, climatic and topographic conditions of an area. So the climate is different, environment is different, tropical, and we will see different type of plants. And inside the sea also, you see there are a large type of plants which are there. Do they exist? Have you seen in the pictures? Yes, sir. Or deep inside the sea, what you see, there is a plant life. There are species, different form of species, which we even don't know. Only we see in the pictures. So biodiversity is all different kinds of life you will find in one area. In one area, I'm saying the variety of animals, plants, fungi, microorganisms like bacteria that make up the natural world. Biodiversity, what is the importance of biodiversity? It supports everything in nature that we need to survive. And you are maybe thinking that if the animals will be out, then we will be able to resist. The answer is no. There is a food chain, there is a food web. Even the microorganism like bacteria, fungi, all these are required to complete the cycles of life which are going on. So inside the soil also, there is a lot of bacteria. Inside my body also, we are talking of bacteria in our gut. All these are the requirement. They are working for existence of life on planet. They are helping, supporting one another. So we need to survive. They are responsible for producing food, clean water, medicine, shelter, everything. So biodiversity supports us. If we will destroy the biodiversity, what will happen? Already you are seeing some problems. What type of problem you are aware of? Climate emergency. Did you know that? You are aware of the environmental pollution. And so much debate is going on. Large amount of carbon is being emitted and that is causing a danger. And rainforests are burning. All these problems you are facing. You have seen recent years, there are more floods. And you have seen at certain areas, there are a loss of river life. Rivers are vanishing at many parts. And many extinction of many forms of life. They have also given names of that which forms are not existing now, which were there 1,000 years, 2,000, 3,000 years earlier. All this is happening on planet Earth. You have seen the population of lions is decreasing. In some part, there are elephants population is decreasing. All this is the result of the climate changes, environmental changes, and the habitat what the living organism needs. When those characteristics, those ingredients are not available, what will happen? If temperature of my place becomes very high, what will happen? Then you have seen when heat waves flow, people die. And severe cold, also people die. You have heard about it? Yes, sir. Even in Canada, you heard that because of the strong heat, people died. In floods, people are dying. So all this biodiversity is for supporting the life. There is a cycle which is existing on planet Earth. So diversity of living organism is essential for us. The flora and fauna, it has to be maintained in order to survive, for the food which we are eating, for the water we are drinking, and everything on the earth. So, a very good, very interesting topic.
So this first lecture is introduction, just to understand, student, why we want to study biodiversity and how will we classify. Why do we want to have a classify the organisms? If the number is very small, there is no need to classify. But the number becomes very large and they are having different characteristics, then we will have to classify and then only we can study them. Now think of all different forms in life which occurs on Earth. On one hand, we have microscopic bacteria, which is few micrometers in size. We have blue whale, redwood trees of California, approximately 30 to 100 meter. Pine trees are living for thousands of years, while insects like mosquitoes do within few days. Life also ranges from colorless, even transparent worms to brightly colored birds and flowers. The wildering variety of life around us has evolved on Earth over millions of years. Is it clear? Yes, sir. How old is the planet Earth and all that? We have a complete history and story, and millions of years all this is happening. However, we do not have more than a tiny fraction of time to try and understand all the living organisms. Can I understand all the living organisms if I say 1.6 to 1.7 million species, student? Can I understand all of them? Answer is No, no. sir. So it will be our waste of time, not possible. Not possible to study and understand them. Therefore, what will we do, student? Therefore, we must be able to form classes, groups, which have similar properties. There should be some similarities in their characteristics, and that is what we will need. But we have to decide which characteristics and which properties. All right. Let me take water. I say water, heal me, and sip water, hot water. Okay. Okay. The first question which is put to the students and they have asked in the NCERT. First question is there. The top question till we now answered. Why do we classify organisms, student? What is your answer? Sir, since there is a variety of living organisms on Earth, like various bacteria and animals, plants, etc. Therefore, to understand them better and to learn about them more clearly, uh, it is required to classify them. Okay. As I said, it is not possible to study individually such a large number of species. And when it is not possible, then it becomes absolutely essential to form groups. And then the study will become easy. Why do we want to study them? Because when we study, we will understand them. Everything we want to understand, what are their properties, what are their characteristics. And as I said, these organisms are required for the survival of life on Earth. There is a food chain, there is a food web. Every organism is involved in some work, whether they are visible to us or non-visible to us. So there is a cycle, food chain, food cycle, all this is going on. So classification has some important benefits. That is the reason scientists are interested to do that. What are the reasons that classification? First important thing is classification allows us to understand diversity better. So if I will classify, if I classify classes of, this is section 11th A, commerce, 11th B, bio, medical, 11th C, non-medical. So what happens? It allows to understand diversity better. Second, it helps in identification of living organism as well as in understanding the diversity of the living organism. Third, classification helps us to learn about different kinds of plants and animals, their features, similarities, and differences. Certain animals have certain similarities and differences.
So we will study their features. So do for plants. We will study their similarities and the differences. Next, it enables to understand how complex organisms evolve from simple organism. Evolution, as I say, is a process which continues and is taking place. Millions of years have taken place. So we want to understand how they have evolved, how our life has evolved. All this is a part of the study of biology. To understand and study features, similarities and differences between different living organisms, they are grouped in different categories. So what we want to study, student? Features. As I said, one is small in size, some big, and shapes are different. We are walking on 2 legs. Dogs are running on 4 legs. And see the features: cow different, buffalo different. You have elephant, camel, fish, and those birds. Everything the features. We will also study the similarities, the differences. So in their characteristics, therefore, there is a need to classify and form groups. That is clear to us? Yes, sir. Okay, classification, first part. Now, when I will classify student, there should be some basis of classification, right? Yes, Can sir. I put the students who are commerce with the science section? Tell me. No, sir. So what is the basis? The basis is commerce section is alag, and that medical is alag, non-medical is different. That is the basis they are using in our school. So when I say animals and these species, we again organisms, so many, we have to classify what basis we will use. So scientists were thinking all this. The problem is beforehand. An ancient great thinker, Aristotle. You have heard the name of Aristotle a lot, students. Yes, sir. A great scientist and a philosopher. So he was the first who came forward with a classification on the basis of their habitat, student. What do you mean by habitat? What is habitat, student? The type of environment in which they live. Okay. So he first saw ki probably environment, what type of environment we see on Earth, student. And when I say you know, you have seen there are water, air, land. So he was identifying that what elements are living in water, what are living in air, what is living in land. So he said, okay, that could be a classification to say. He classified them in 2 groups, student. Those living in water and those living on land. This was the simplest which was given. Probably at that time, that is all we could say कि पानी में जो रहते हैं वो तो डिफरेंट है और जो जमीन पे चल रहे हैं वो डिफरेंट है. लगता ही है. यस और नो? Yes, sir. भाई मैं तो पानी में नहीं रह सकता, Yes. ना मैं सो सकता हूँ पानी में, ना ये जो डॉग्स हैं और ये एनिमल रह सकते हैं. तो फिर कौन पानी में रहते हैं, कौन पानी में सारी लाइफ बिताते हैं, ये तो डिफरेंट ही है. लेकिन व्हाट हैपेंड, this classification was to simplify, to justify the inclusion of a particular organism into particular group. लेकिन ये काम नहीं कर पाई, इससे कुछ फायदा हुआ नहीं इतना, क्योंकि इससे वो इंक्लूजन इन ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ग्रुप में वो नहीं डाल पाए. उस समय बायोलॉजी के बारे में, सेल्स के बारे में एनफ नॉलेज वाज नॉट अवेलेबल. बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल्स हैं. हाउ द सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. आप कह रहे हो कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, फिर आप कह रहे हो कि प्रिमिटिव सेल हैं और मॉडर्न सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं. तो यूरोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब जो पहले एफ स्पीसीज थे वो सिंपलर फॉर्म में थे और उसके बाद एडवांस्ड फॉर्म में आ गए. हम बहुत एडवांस फॉर्म में आ गए. तो कितने ईयर्स लगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स आप बता रहे हैं, यही कह रहे हैं हम? Yes, sir. अच्छा, तो फिर सबसे पहले आसान चीज यही लगी.
तो इसके ऊपर फिर ये सोचा कि भाई ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम उनके इनसाइड को स्टडी करेंगे तो हमें लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, this is not, it is too simple classification, and therefore they have to find some other important characteristics which they can use for classification of these species on earth. यहां तक हमें समझ में आ गई कहानी, ये कहानी है। देखो हमारा हर लेक्चर एक स्टोरी, एक कहानी है, कहानी को समझना है, और इसी तरह से ही हम लर्न कर लेते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई कि क्या Yes, हो sir. रहा था? अच्छा, आगे फिर कहानी, कहानी इसलिए हम है कि तुम्हारे पुराने टाइम पर भी तुम्हारे दादी और वो माँ तुम्हारी कहानी सुनाती थी सुनाने के लिए। बच्चे सोते नहीं थे तो वो कहते जी कहानी सुना दो। तो आपने सुना है भाई, कहानी सुनाते सुनाते बच्चे ना रात को आराम से सो जाते। और हम भी कह रहे हैं हमारे लेक्चर ऐसे हो जाएं जो बहुत आसान हो जाएं और बच्चे इजीली समझ जाएं। our lecture should become a story, and so that children get interested in it rather than cramming, memorizing, they start learning it. तो उन्हें अच्छा लगे, आराम से, माइंड पे प्रेशर नहीं है। तो अभी तक कहानी ठीक चल रही है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्टोरी जब इंटरेस्टिंग हो जाती है, सस्पेंस होता है, मिस्ट्री होती है, तो फिर अच्छा लगता है भाई आगे क्या हुआ, हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्यों हुआ। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे थे इसके ऊपर। बायोलॉजिस्ट, आई एम नॉट ए बायोलॉजिस्ट, मैं तो साइंस ऑफ लाइफ पे काम करता हूँ, लेकिन मैं भी लर्न करता हूँ। मुझे मजा आता है जब कहानी बन जाती है, मैं भी स्टडी करता हूँ कैसे हुआ, फिर आगे क्या हुआ। हाँ अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर इसने तो कह दिया जो पानी में रहने वाले हैं और जो लैंड में वो डिफरेंट क्लास कर दी मैंने। लो भाई, इसने क्या बोला, एरिस्टोटल ने। आगे देखते हैं क्या होता है फिर। अब वो कह रहा है कि सम एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई साइंटिस्ट कहता है कि कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का, देयर शुड बी सम साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। अब साइंस की बात शुरू हो गई भाई। तो साइंटिफिकली क्या है सेल, आपने स्टडी किया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल पढ़ा, आपने पढ़ा पहला चैप्टर। Yes, sir. क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट, कि हर चीज में सेल होते हैं। Yes, sir. तो अब हमें ये तो फाइंड करना चाहिए कि किस टाइप के सेल है, व्हाट आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो सेल में उन्होंने देखा था एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस भी है आपने देखे। तो फिर सबसे पहले उन्होंने कहा देयर शुड बी सम साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे साइंटिफिक बेसिस। अगर हमने ग्रुप्स बनाने हैं, इफ वी वांट टू फॉर्म ग्रुप्स, क्लासिफाई, तो साइंटिफिकली क्या है, सबसे पहला देखता है, वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई ये सेल जो हैं इनके बने हुए हैं, इसमें न्यूक्लियस है, वेदर न्यूक्लियस में और मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये जो न्यूक्लियस है ये मे और मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, कह रहा है in an organism. On this basis, organism can be divided into two groups, prokaryotes and eukaryotes. अब प्रो का मतलब होता है जो पहले थे, पुराने थे, जो सबसे सिंपल थे, ओल्डर वन। ओल्डर से आपने कहा इवोल्यूशन हो गई, व्हेन द इवोल्यूशन विल टेक प्लेस वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे और डिफरेंट फॉर्म में आ जाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी देखना जरूरी है कि जब हम व्हेन वी विल क्लासिफाई, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है, दो टाइप के हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, प्रोकैरियोट्स व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, न्यूक्लियर मटेरियल आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। देखो जो ओल्ड फॉर्म थी, जो प्रिमिटिव फॉर्म थी, उसके जो न्यूक्लियर मटेरियल्स थे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, देखा था आपने। Yes, sir. उसको उन्होंने बोला कि प्रोकैरियोट है। और यूकैरियोट्स कौन से हैं, व्हेन न्यूक्लियस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड और न्यूक्लियर मटेरियल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, इनके पास एक मेम्ब्रेन है। तो ये एडवांस्ड फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल आ गया, और ये एडवांस। तो दिस इज अ बेसिस ऑफ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस। जो करेक्टरिस्टिक्स आई विल यूज फॉर क्लासिफिकेशन, ये एक करेक्टरिस्टिक्स हम यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये यूकैरियोटिक वाला बता रहा है जो एडवांस्ड वाला, ठीक है, which allows cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other.
हमारे अंदर क्या हो रही है, सेलुलर प्रोसेसेस हो रही हैं। तो सेलुलर प्रोसेसेस हमारे हर ऑर्गेनिज्म में सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं, क्योंकि यू आर मेड अप, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Yes, sir. तो वो एफिशिएंटली कैरी हो जाती है किसमें, इक्रियोट्स में, विच हैज अ सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, ठीक है। ये कौन से हैं, यूकैरियोटिक वाले। Therefore, organisms which do not have clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical path organized in very different ways. This would have an effect on every aspect of cell design. तो cell design ही change हो जाएगा. Further, nucleated cells have the capacity to participate in making a multicellular organism. और ये तो multicellular organism बना लेते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। and they can function and there will be specialized functions, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने बताया था डिवीजन ऑफ लेबर आपने सुना था। सो व्हाट हैपेंस, दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, तो वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो ये सही लगा तुम्हें साइंटिफिकली? Yes, sir. तो सबसे पहले यही स्टडी करना है कि ये जो न्यूक्लियस है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और नहीं। तो प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, प्रिमिटिव वाले, और यूकैरियोट्स वाले क्या हैं, जिनमें की स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये सारा मेम्ब्रेन बाउंड है। तो हमें ये भी कैरेक्टरिस्टिक पहले रखना चाहिए। ये मतलब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमें यूज करना पड़ेगा फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो साइंटिस्ट इस लाइन पर आओ, इसे बोलते हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला न्यूक्लियस, आगे देखते हैं क्या हो रहा है फिर। सेकेंड ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स, नंबर 2 पॉइंट पर आगे, व्हाट अदर प्रॉपर्टीज, व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल यूज, साइंटिस्ट कौन से यूज करेंगे, बायोलॉजिस्ट। नंबर ऑफ सेल्स, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और मेनी सेल्स। आपने पढ़ा सिंगल सेल वाले भी, कौन से हैं सिंगल सेल वाले, कोई नाम आपको याद है? Yes, sir. Chlamydomonas, amoeba, paramecium. अच्छा, ये अमोएबा आपने पढ़ा। तो ये तो बहुत ही प्रिमिटिव वाली फॉर्म है, आपने देखा था सिंगल सेल। इसे क्या बोला था इन्होंने, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे क्या है, विच हैव मोर देन वन सेल। जो मोर देन वन सेल वाले हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड, Multicellular organism. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब इम्पोर्टेंट बन गया कि हमें ये देखना है कि जब व्हेन वी विल डू द क्लासिफिकेशन, भाई कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, भाई ये सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। न्यूक्लियस आपने देख लिया सबसे पहले, Yes, sir. अब उसके बाद में देखेंगे कि कितने सेल हैं। अब ये क्या कह रहा है, डू द सेल अकर सिंगली और दे अकर ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। Cells that group together to form single organism use the principle of division of labor। हमने स्टडी किया था डिवीजन ऑफ, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर है। Yes, sir. डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम कर रहे हैं आपके शरीर के अंदर, इतने सारे कर रहे हैं। तो बॉडी डिजाइन क्या होगा फिर, इन सच ए बॉडी डिजाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल। क्या सारे हमारे सेल सेम होंगे मल्टी सेलुलर में, नो, डिफरेंट हो जाएंगे बॉडी डिजाइन, ठीक है। इंस्टेड ग्रुप्स ऑफ सेल विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने वाले हैं, इनका क्या होगा, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। आपका हार्ट का एक फंक्शन है, लंग्स का एक फंक्शन है, किडनी है, वो अपना फिल्ट्रेशन यूनिट है, एक्सक्रीशन है, स्टोमक डाइजेस्ट कर रहा फूड को, इतना कुछ चल रहा बॉडी में। तो इतने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो रहे हैं। Yes, sir. तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा सारे बॉडी में, आप इतना कुछ है।
तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और स्पेशलाइज्ड फंक्शन चल रहे हैं अंदर। तो दिस मेक्स ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी डिजाइन जो ऑर्गेनिज्म का होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अमोबा, एक अमोबा तुमने बताया है और ये डिफरेंट रहेगा, और वार्म जो होगा वार्म वो डिफरेंट है। तो वार्म कौन सा है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? मल्टीसेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर में आ गया, वो सिंगल में आ गया। तो इसका बॉडी डिजाइन क्या है, डिफरेंट है। बॉडी डिजाइन विल बी डिफरेंट इसका एज कंपेयर टू अमोबा। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कौन सा यूज करें फिर क्लासिफिकेशन के लिए, कि भाई कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? यस। यहां तक ठीक लग रही है स्टोरी? यस सर। तो साइंटिस्ट कैसे वर्क करते हैं, सोचना पड़ता है। देखो, विदाउट थिंकिंग मैं कुछ कर नहीं सकता, सोचना पड़ता है भाई कॉपी पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। एज वी गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, मोर एंड मोर नॉलेज, देन वी आल्सो स्टार्ट की क्लासिफिकेशन। व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? अभी तक दो क्लासिफिकेशन बताई, कौन कौन सी? फर्स्ट न्यूक्लियस एंड सेकंड नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, वेरी गुड। अभी तो आपको समझ में आ गई, याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है। अब थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट, बताओ। व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप अपना फूड कैसे लेते हैं? हाउ डू यू टेक योर फूड, टेल मी। सर द फूड दैट इज रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो आप क्या अपना फूड खुद बना सकते हैं? नो सर। नहीं बना सकते। लेकिन कौन से अपना फूड खुद बनाते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स। तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स। तो दो कैटेगरीज फाइंड की गई, दैट देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप कह रहे हो प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसी क्या चीज होती है प्लांट्स में कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट। तुम्हारे बॉडी में क्लोरोफिल है? नो सर। तो फिर हम अपने सनलाइट से कैसे बनाएंगे? नहीं बनाते। जिनके पास होगा ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट जो भी हैं, तो वो अगर मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर लगा दूं तो फिर तो चेंज हो जाएगी। देखो कैसे स्टडी चल रही है बायोलॉजी की आजकल। यू सी हाउ मच this is not a 9th class lecture by any way. This lecture, once I upload, it will be used 9th, 10th, 11th, because there will be a lot of material, basic learning. Once we understand student, then we start working. Our mind also develops. हमारा mind का भी evolution होना चाहिए जब हम study करते हैं। समझ में आ रही है? तो यस ये सर। जो हमारे lectures हैं ये evolutionary हैं, ये आपको evolve करेंगे, mind सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि क्या हो रहा है। और दूसरे कौन से हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? दे हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। तो अब ये भी एक क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, करेक्टरिस्टिक आ गया कि देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रॉफ्स एंड देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो क्या तुम अपना खाना खुद बना सकते हो? नो सर। यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। आपने स्टडी किया, बार बार इसको स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट। थर्ड क्राइटेरियन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हम कह रहे हैं? डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड? वो कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body design. क्या बात सही है? यस सर। तो बॉडी डिजाइन तो चेंज हो जाएगा। हमारे बॉडी डिजाइन डिफरेंट है, प्लांट्स के डिफरेंट है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? यस सर। चलो मैं पानी थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो अच्छा है कि जब कहानी सुनाई जाती है तो कहानी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए कि कहीं कहानी सुनते सुनते हमें नींद ही ना आ जाए, जैसे कि तुम्हारी मम्मी सुनाती थी जब तुम्हें सुलाती थी।
कहानी, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो वो कह रहा है मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया सर, इंटरेस्ट आ गया तो मैं सो ही गया। ये उसने बताया मेरे को, स्टूडेंट। उसको नींद आ गई। मैंने कहा कहानी है शुरू हो रही है तो अब आ जाओ। तो वो कहानी सुनते सुनते सो ही गया। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब में लेक्चर आ गया, उसको सुन लेना जो बचा। ये भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। देखो ऐसा क्यों हुआ, ये जो माइंड होता है ना हमारा, ये आप पिक्चर देखते हो ना, उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हो इमोशनली कि आप रोने का सीन आता है ना, उसमें रोने शुरू कर देते हैं कुछ लोग। आपने देखा कभी? Yes, sir. तो ऐसा होता है, इमोशंस होती हैं। कोई कोई ट्रेजेडी होती है, कोई ऐसी चीज होती है, तो आप उसका सीन देखते हो ना, यू स्टार्ट क्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, if presently there is a tragedy in the country, a plane crashes and a very very important army officer, our, you know, former chief of the army staff and all that, once you see the scenes, then what happens? Emotionally क्या होता है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं and tears come in our eyes। तो ये स्टोरी जो होती है वो इसी तरह चलती है। तो अब ये तक 3 पॉइंट मैंने बताए, बताओ तीनों कौन कौन से आ गए? Sir, first is nucleus, second is number of cells, and third is mode of nutrition. ओके, अब नेक्स्ट आ गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब वह कह रहा है कि इवन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर कैन बी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई, व्हेन ए सेल इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, इट इज कॉल्ड सेलुलर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन सम सेल ग्रुप्स टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे भी हैं जहां पे सेल्स ही काम कर लेते हैं डिफरेंट, और जहां पे फिर सेल इकट्ठे होकर टिश्यूज बना देते हैं। आपने टिश्यू पढ़े थे? Yes, sir. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो गया सेल्स का, कि वन मैंने सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ और मैंने टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, और दूसरे में आप कह रहे हो कि सेल इज रिस्पॉन्सिबल। इन दोनों में डिफरेंस है। सेल, और जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है, उसे आपने कहा कि वो टिश्यूज हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एवरी टिश्यू परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। और जब टिश्यूज ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? Organs. तो टिश्यूज ग्रुप टुगेदर, दे विल फॉर्म ऑर्गन्स। हमारे अंदर कितने ऑर्गन्स हैं? हम कह रहे हो किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, इतने सारे ऑर्गन हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन टिश्यू ग्रुप्स टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, इट इज कॉल्ड when organ level organization. Similarly, organ system level organization in complex organism. तो हमारे complex organism से हमारे में organ system level है, organ system level of the organism that perform photosynthesis. What is the level of organization of their body? तो आपने देखा कि organ system भी जो है वो भी different है। तो ये भी एक हमें मिल गया characteristics for classification of the animals. How does individual's body develop and organize and its different parts, and what are the specialized organs found for different functions? तो different organs जो हैं different functions perform करते हैं। We can see even in these few questions that we asked, hierarchy is developing. The characteristic of body design used for classification of plants will be very different from those of important for classifying animals. तो एक hierarchy बन रही है, क्योंकि जो body design प्लांट्स का होगा और एनिमल्स का होगा, दे विल नॉट बी सेम। क्या वो सेम होंगे? No, तो sir. बेसिक डिजाइन आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर फूड। ये दे नीड टू मेक देयर फूड। उनका अपना फूड बनाना है उन्होंने, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस एनिमल्स, तो दे मेक देयर, दे एक्वायर देयर फूड।
हम लोग बाहर से फूड ले लेंगे। Therefore, the design features having a skeleton, for example, are used to make subgroups. तो इनसे हम क्या बना लेते हैं, सब ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ग्रुप्स बनेंगे, फिर सब ग्रुप्स बनेंगे। क्या होगा, ग्रुप्स बनेंगे और सब ग्रुप्स बनेंगे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ग्रुप्स बनेंगे और सब ग्रुप बनेंगे। अभी तक जो हमने किया स्टूडेंट, उसका टॉप क्वेश्चन ये आ गया, why, which do you think is more basic characteristic for classifying organism? The place where they live, the kind of cells they are made up of. Tell me, कौन सा? Sir, option B, the kind of cells they are made up of. So fundamental unit of life is cell. So the kind of cells they will make will be more basic characteristic for classification of organism. Yes, sir. तो इसलिए जो पहली सबसे पहली क्लासिफिकेशन आई थी एरिस्टोटल की, वो फिर अब नहीं चलेगी। ठीक है, कि भाई वो तो पानी में रहते हैं, तो उसलिए क्लासिफिकेशन कर दी वाटर वाले और लैंड वाले, तो वो अब कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने आंसर किया करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड? तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हम यूज कर रहे हैं जिसपे हम ब्रॉड डिवीजन करेंगे? कौन सा किया हमने? Nucleus. न्यूक्लियस में क्या क्या यूज किया? एरोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Yes, sir. Eukaryotic and prokaryotic, sir. Then, sir, we did number of cells. हाँ, मतलब वो प्राइमरी कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहे उसने क्वेश्चन में। ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारे नहीं पूछे, एक पहला जो किया था हमने, सबसे पहले न्यूक्लियस के बेस पे किया, उनके पास सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। Yes, sir. तो स्टूडेंट्स हमें समझ में आई कि हाउ, फर्स्ट जो है चैप्टर समझ में आया कि हम व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग organisms in order to study them, their features and other properties of these, and in order to see what are the similarities and what are the differences. So okay, then this ends up the topic, first introduction lecture. We will see you in the next class. Continue to subscribe our YouTube channels and forward it to your friends so that they can learn the science. And these lectures will be evolutionary lectures, could be used in 9th, 10th, 11th, 12th and higher classes, so they will be good for you. Okay, bye bye, see you next time. Thank you, sir.